Hello childrens, once again welcome all of you in Maths online class. Childrens, in this video I will be cover the today's topic word addition, subtraction and multiplication of the decimal. You know this is a revision. So revision time, I have explained the decimal and what is decimal and how to write and read the decimal in my previous video. So in this video I will be re-explaining the addition, subtraction and multiplication, and everyone watch the full video because at the last I have questions for you. Understood? So let's start today's topic. First is addition. Addition इसमें इस एडिशन में in this addition and the normal addition no any difference. Only one thing is difference. What? यहां सिर्फ एक चीज डिफरेंस है. क्या? ये डेसिमल, ये पॉइंट है, बस यही डिफरेंट है इनमें. और वो पॉइंट कैसे आप यूज करोगे, उस पॉइंट को आपको सेम, एंड यू नो हाउ टू राइट द नंबर्स. सो ऑलवेज वी ऐड द नंबर इन ए कॉलम फॉर्म. And what is a column form? You know how to write in column form. We add and subtract and multiply according to the place value. हम add, subtract और multiplication कुछ भी division करना हो according to the place value करते हैं हम. You know very well. And so first, what is this? 175.05, 0.05, 9.505. Understood? So we have to write the numbers according to the place value. 75.05, this is the first. Understood? Then what is the number? 0.05. So how we write? So look here, what is that? Ones place 0. So we write the ones place below the ones place in the second number. Second number का भी ones place फर्स्ट नंबर के ones place के नीचे ही राइट होगा और डेसिमल उसी डेसिमल के नीचे ही राइट होगा. यूज करेंगे, कहीं और हम डेसिमल जाके यूज नहीं करना. सेम प्लेस. एंड देन 0 देन 5. अंडरस्टूड? दिस इज डन. Now third is a 9.505. Okay, the 9.505. And listen, जब हम उसके बाद, now after we compare the decimal digit, which is a decimal number. In this number, how many digit have? 3, 2, 2. जब digit equal ना हो तो हमको इसको equal करना होता है. How we can equal? By the using the zero. जीरो को यूज करके हम उसको करते हैं. एंड यू हैव टू राइट हियर द जीरो. अंडरस्टूड? नाउ वी ऐड जीरो. दिस इज द 5. दिस इज द 5. 5 प्लस 10. राइट द जीरो. कैरी विल बी 1. देन 5 प्लस 1 6. देन पॉइंट 95 14. 95 14 कैरी 1. 7 प्लस 1 8 and then 1. Then answer will be 184.605. Understood? Now second, 0.0085, 0.0908 and then 17. Look here, ये 17 है. This is the whole number. So how we can add this type number? Same वही process. आप place value according write करोगे, डेसिमल को डेसिमल के साथ राइट करोगे. अंडरस्टूड? डेसिमल को डेसिमल के साथ राइट करेंगे. 0.0085, 0.0908 and then what is this? Listen, यहां मिस्टेक करते हो आप लोग. Sometimes students write the 17 after the decimal. After the decimal. This is not. 17 is the whole number. So always we write the before the decimal here. And then we use the decimal and we can use or we can write the 0 after the decimal. If you need 1, then you can use 1. If you need 2, then you can use, and here we need the 40. So we can use the 40 or we can write the 40 and then add 5, 8, 13, carry 1, 8 plus 1, 9, then 9, then 0, then 7, then 1. Answer will be 17.00993. Understood? Now 9.6 subtraction. 9.56 from 10. This is the creating the problem sometimes. Understood? Subtraction from का ये क्रिएट करता है. From 9.56 from 10 meaning 9.56 में से 9.56 सब्ट्रैक्ट करो. किस में से? 10 में से. 10 में से सब्ट्रैक्ट होगा. So first we write this number. This number is greater. So always we write the greater number upside in the subtraction.
तो एक रूल हम बना देते हैं. We can rule is firstly you decided which one is the first number. So this is the first, this is the second number. So first and second, and second minus first. Keep in mind क्या करोगे second, इस कंडीशन में क्या करना है, second नंबर में से first को सेपरेट करना है. And which one is second? So 10 is second and this is the first number. Then here is the 0. We can take the borrow from here. 10 minus 6, 4. 9 minus 5, 4. Point, what is left here? 9. 9 minus 0. Then answer will be 0.44. This is the answer. Understood? This subtraction. Now 0.093 from 0.04. Compare these two numbers. 0.00. Listen. ये क्या है? दोनों 0 है. इस प्लेस पे क्या है? 4 आ गया. So this is the greater number. Understood? So the first number and this is second number. You know the second minus first. 0.04 same. यहां आप क्या करोगे? एक 0 यूज कर सकते हो. 0 नहीं है. Subtract now 10 minus 3. 7. 4. We take the borrow from here. 40 minus 9. 5. Then here is a 3. 0.0. 0.357. Understood? So now multiplication. Two type multiplication. Multiplicand and multiplier. You know this is multiplicand, this is multiplier. जब सिर्फ मल्टीप्लिकेंड में डेसिमल हो तो उसका सब्ट्रैक्शन रूल अलग होता है. जब मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लायर दोनों में सब्ट्रैक्शन हो और डेसिमल हो तो उसका रूल अलग होता है. लुक हियर. 15.2 multiplied by 3. What is given here? 15.2 multiplied by 3. 3 2s are 6. तो मल्टीप्लिकेशन कीप इन माइंड. फर्स्टली forget your decimal को भूल जाओ. First you multiply like as a simple multiplication 1 by 1. 3 2 is 6, 3 5 is 15, 5 carry 1, 3 1 is 3 plus 1 4. जब मल्टीप्लाई कर लो, ऐड हो जाए, अगर एडिशन करना हो तो प्रोडक्ट में फाइंड होने के बाद then you observe the decimal. Where the decimal in a only multiplicand. And how many after how after this digit? 1 digit. Decimal ऑब्जर्व करो कितने डिजिट के बाद है? 1 digit. After 1 digit. So वही 1 digit के बाद आपको decimal यूज करना होगा प्रोडक्ट में. Then from the right side, decimal always be used from the right side. Keep in mind in multiplication and everywhere you decimal always use the where from right side. From right side. And the answer will be this one. And when the decimal present in both कहां मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर में, यहां कंडीशन अलग हो जाएगी. फिर कैसे करेंगे? 2 3s are 6, 2 7s are 14 plus 1, 2 9s are 18 plus 1 19, 1 3 1 7 1 9. Then add 6, 4 plus 3 7, 9 7 16, 9 1 10 plus 11. Understood? आपको ये डेसिमल प्रोडक्ट मिला. मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया. सिंपल से मल्टीप्लाई कर दिया. ऐड करने के बाद देन आफ्टर द एडिशन वी ऑब्जर्व द डेसिमल प्लेसेस. हियर आफ्टर 2 डिजिट, हियर आफ्टर 1 डिजिट. मल्टीप्लिकेंड में क्या है? आफ्टर 2 डिजिट. एंड मल्टीप्लायर में आफ्टर 1 डिजिट. काउंट द बोथ नंबर, ऐड द बोथ नंबर डिजिट. 2 and plus 1 3. मतलब टोटल कितना हो गया? 3 डिजिट. So we use the decimal after 3 digit in a product from the right hand side. फिर हम क्या करेंगे? 3 digit के बाद प्रोडक्ट में यूज करेंगे राइट साइड से. 1 2 3. Then answer will be 11.6766. So this was all about for the addition, subtraction and multiplication. I hope you understand. So for today you have homework, and homework, these are questions are your homework. You pause the video and you note down your homework. What is the homework? 0.05, 15, then 6.5. What? 0.5, 15, then 6.5. Add. इसमें add करना है. Now 7.5 from 9.08. This is a subtraction. And this is the multiplication. Understood? These 3 questions, your homework. You solve the questions and write the answer in the comment box. It's compulsory for everyone. If you when you write the attendance or when you write your name, then write also the answer of these questions. Understood? This is compulsory. This is very important. So everyone write the answer of these questions in the comment box. So thank you and take care.